Am I audible? Yes, sir. Okay. So the whiteboard has been closed by default. Okay. I'm sharing the whiteboard of Zoom only because for opening that Microsoft whiteboard it will take time. So हमने जो अभी तक देखा वो हमने देखा कि सभी का एक्सप्रेशन जो भी हमने ए बी सी डी का जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है उन सारे एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है. सो वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर ए एज okay, so we have found out the expression of a as a plus c plus b x naught d. Okay, in the same way we will get the expression of b as b plus c x naught d. Okay, in the same way we will get the expression for c d e f and g. Okay, in the same way we will get the expression of all these outputs in terms of the inputs. Okay. Now the next thing what we have to do, जो भी expression हमें मिल रहा है, so we will get the expression of c as b plus c bar plus d. We will get the expression for d as a plus cd bar plus b XOR c plus d bar. Okay. For e we will get the expression as b bar d bar plus c d bar. All of you have to get these expressions. Okay. So as we can see here, d bar is common, so you can take common also. Again, now we have the expression of f as a plus c bar d bar plus b c bar plus d. And for g, you will get the expression as a plus c d bar plus b XOR c. Okay, you will get all these expressions, and next you have to do is to represent all these functions using all these expressions with the logic diagram. Okay, so we have all the 4 inputs as A, B, C, and D. Instead, we will get the NOT. So if we have A, B, C, and D as the inputs, so we also need their NOT correspondingly their complement also. Okay, because in expression we have the complement of these variables are also present. Okay, so we will have the inputs for their complement also. So Harek, सर yes, सर बी में बी बार होगा ना? B में B बार होगा. ये आप लोग देख सकते हो क्या भी जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, मैंने तो अभी बुक से डायरेक्टली लिख दिया है. यस ओके सर. यस B बार आ रहा है, B बार आ रहा है, ये B बार आ रहा है. जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो आप लोग देखोगे. I am just want you to get that how we are getting the expressions. Okay, so now we have for A, so we have to draw the expression for A, for the logic diagram for A, as we have A plus C. So we need, because here OR gates are available, so we need A, C, and the XOR of BD, XNOR of BD. So we need a B and D. इन दोनों को लेकर हम क्या करेंगे,
एक XNOR गेट बनाएंगे और इन तीनों का क्या होगा, और होगा. Okay, so this is A. If we have these four inputs, then we will have the A as this. Now we need for B. For B, we can draw the value as it is B bar. That is here. From here, we will take B bar and the XNOR of CD again. So XNOR of CD is available. We have the XNOR of CD is available over here also. तो हम यहाँ से भी इनपुट ले सकते हैं. Otherwise, we can take another C bar D from here. Okay. तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास already, okay, sorry, here it is B bar D and here we need C bar CD. Okay, so this should not be the case. How can undo? Okay, so we need C and D, the XNOR of C and D. So here we have C and D, and we will take the XNOR of this one, and both of these outputs will be ORed. So here we are getting the logic diagram for P. In the same way, we can find the logic diagram of C, D, E, F, and G. Okay. So I think all of you will do this by yourself. Or I will do this. Yes. Actually, what you have to do, just from these expressions, you have to get the logic diagram. So अगर हमारे पास expression है तो हम आसानी से logic diagram निकाल सकते हैं. तो C के लिए अगर देखें तो C के लिए we will have B, C bar और D का और है. So we will take input from B, C bar और D. इन तीनों का और है. So हम इन तीनों का और कर दें. बस हो गया. We have this value C, not E. Okay, it is C. So इस तरह से हमें लॉजिक डायग्राम मिल गया C का. Then we have the logic diagram for D, E, F and G. I think all of you will do this by yourself. So आपके पास बुक्स ही अवेलेबल है, आप वहां से देखो और इसका जो भी है नोट्स बनाओ. Okay, so let us end the class to be end here. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक. आज के लिए इतना ही. Am I audible? Yes, sir. Yes. किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. सभी को देख लेना है जो पोर्शन बच गया यहाँ पर, जो मैंने सारा के मैप मैंने ड्रॉ किया, आपको वो सारे के मैप्स ड्रॉ करने हैं. ओके.